Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Let's begin with the third part of our topic digestion and absorption of food, which is about the absorption. Learning objectives are absorption of nutrients, how the nutrients get transferred, site of absorption, rate of absorption of food in the small intestine, कौन से nutrients in the small intestine में absorb होते हैं, and the absorption of food in the large intestine, कितना percent absorb होता है और कितना percent excrete होता है. Also the terminology which is used for the utilization of nutrients is metabolism, और उसमें हम देखेंगे what does a mean of anabolism and catabolism. Absorption of nutrients. Absorption basically is the transfer of nutrients through the walls of the intestine into the blood and then into the lymph circulation. जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स जब हमारे माउथ, एसोफेगस एंड स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो वहाँ पर लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू एक ऐसा सर्कुलेशन जो कि हमारे उस फ्लूइड को फोर्स करता है ताकि वो सारा फ्लूइड ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो सके, और वहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं जो कि एक्सेसिव टॉक्सिन्स या जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको रिमूव करके उसको सर्कुलेशन में एंटर कर देता है. उस सर्कुलेशन में एंटर होने का मकसद क्या है? ताकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाया जा सके. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, प्राइमरीली जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूडेनम में और ज्यूजेनम में होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. बाइल जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से, बट नॉट all of them, but some of the substances get absorbed by the ileum, and those substances that cannot be absorbed here will pass out to the large intestine. Absorption of food in the small intestine. First of all, we should know that our food stays in the small intestine for 2 to 3 hours. जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड 2 से 3 घंटे के लिए स्टे करता है बिफोर रीचिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे उसको बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि वो एब्जॉर्ब, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो सके. एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन are lined with thousands of tiny finger-like projections which are known as villi. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक हेयर्स होती हैं. पूरी इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो इन विलाई से कवर्ड होती है, एंड ईच विलाई वॉल इज ओनली 1 cell thick and they are approximately 4 to 5 million villi in the small intestine. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे ये थिन जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं थ्रू आउट द इंटेस्टाइनल वॉल प्रेजेंट होंगी. तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की वो किस तरह से होगी कि सेंटर में आप यू कैन सी द पिक्चर. इन द सेंटर देयर इज लैक्टेल व्हिच एब्जॉर्ब्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द byproducts of fat, which are fatty acids and cholesterol, while you can see the blood vessels also which provide a good blood supply that aids in the absorption of glucose and amino acids. और यही वाली blood vessels जो हैं वो later on जाके दूसरी blood capillaries से आप कह लीजिए उनसे connect हो जाती हैं, और इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन ब्लड कैपिलरीज से के थ्रू जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और थ्रू ब्लड दे आर सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
जबकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं वो लैक्टेल में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद वो दोबारा फैट फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दे में फॉर्म इनटू अ ट्राइग्लिसराइड, और वो ट्राइग्लिसराइड बनकर जो है वो फिर लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एंटर हो जाते हैं। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो आगे जाके कोलेस्ट्रॉल के साथ लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, और lipoproteins are more easier to get absorbed into the blood than alone triglycerides. Absorption of food in the large intestine. After the nutrients have been absorbed, the waste products and food residues pass into the large intestine. और वो किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और जो वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मोस्ट ऑफ द वाटर हैज बीन एब्सॉर्ब्ड, और जो फूड के रेजिड्यू बच जाते हैं जिनको हम फीसेस कहते हैं, दे बिकम सॉलिडिफाई एंड एट द एंड दे मे excrete out from the body. It may take up to 12 hours to get excreted. और जो सारा प्रोसेस होता है हमारी एक्सक्रीशन का, जो उसमें फाइबर है, it plays a very important role because it gives bulk to the feces and ease out the process of excretion. So food is eaten, digested and absorbed into the blood, then metabolism takes place. What is metabolism? It is a general term that is used for all the chemical changes that occurs in the body. Metabolism में जो है वो सारे वो प्रोसेसेस, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे फूड को न्यूट्रिएंट की ब्रेकडाउन और फिर हमारी जो उस न्यूट्रिएंट की ब्रेकडाउन होने के बाद जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो हमें एनर्जी की फॉर्म में मिले और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, वो सारा प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस जो है वो किसमें आता है? हमारे मेटाबॉलिज्म में आता है। इन शॉर्ट, मेटाबॉलिज्म इज द process and the various chemical changes that takes place in the body that converts the food into the energy form. और वो फिर जाहिर है जब वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, as we have studied the functions of various nutrients, साथ साथ वो अपने सारे functions भी जो है वो कैरी ऑन करते हैं न्यूट्रिएंट्स। Anabolism, it refers to those processes by which new substances are synthesized from simpler compounds, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, या टिश्यू प्रोटीन्स हैं जो कि अमाइनो एसिड से बनते हैं, या ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज से बनता है, कोलेस्ट्रॉल है जो 2 कार्बन यूनिट से बनता है। तो एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस जिसमें न्यू मॉलिक्यूल्स की जो है, लार्जर मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, कुछ बन रहा होता है। जबकि कैटाबॉलिज्म refers to the breakdown of complex substances into simpler compounds. कैसे? जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हाइड्रोलिसिस होती है तो फैट प्रोड्यूस होता है, और फैट क्या देता है हमें? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। सो कैटाबॉलिज्म is basically the breakdown of larger molecules. ठीक है? Anabolism is the synthesis of larger molecules and catabolism is the breakdown of larger molecules. Summary. Since the topic was based on 3 lesson plans, let me summarize the whole topic. Digestion of fats, carbohydrate and protein takes place in the digestive system of human being, where they are broken down by the digestive enzymes. The fats are broken down into fatty acids, carbohydrates are broken down into glucose, and proteins are broken down into amino acids. Once they are broken down into their monomers form, they absorb through the wall of the small intestine and then they entered into the blood system, where fatty acids, glucose, amino acids transported to various parts of the body where they are used to provide energy and give growth and tissue maintenance to the body.
This is how the physical and chemical changes in digestion. Organs involved are mouth. Mouth में जो है food is torn into smaller pieces by the teeth and the food is mixed with saliva. And in chemical changes, saliva begins to break down carbohydrates, that is starches, in the mouth. Then in the stomach, food, hydrochloric acid and other digestive juices are mixed by muscular contractions of the stomach wall and they form chyme. The proteins are broken down by hydrochloric acid. Then small intestine, the chyme or food is mixed with digestive juices where fats, proteins and carbohydrates are broken down into smaller different molecules that can be absorbed by the body cell. Last is the large intestine where water is absorbed back into the body, where bacteria breaks down some undigested materials and helps to produce certain vitamins also. How the absorption occurs? From mouth into esophagus and then stomach, the secretions from the pancreas and the liver takes place in the small intestine where lipids enters into the lymphatic system then into the bloodstream. The absorption of all the nutrients except the lipids takes place in the small intestine from where the rest of the absorbed water is passed into the large intestine where the food remains in the rectum which is not absorbed by the body and after the stay for some time in the rectum it is then excreted out from the anus.